You can save 8 people after you are gone. You can donate all your organs. You can help almost 30 people through tissue donation, various tissues that are donated. So you can do a lot of good, and all that is only going to be after you're gone. आपको जीते जी कुछ नहीं करना, आपको बस पता करना है क्या है ऑर्गन डोनेशन, अपने फैमिली से डिस्कस करना है, क्योंकि भारत में जो कानून है उसके मुताबिक आपका फैमिली, आपका परिवार ही डिसाइड करेगा कि आपकी डोनेशन होगी कि नहीं. Hello everyone, as you all know, I'm Dietician Shipra, and first of all, thank you so much for showing your love and giving so many views on my videos. तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, and guess what? Today I'm with a person who runs an organization by the name of Organ India. So यहाँ पे हम organ donation से related आज इस वीडियो में बात करेंगे. So I would like to welcome Miss Sunaina Singh. Hi. Welcome, ma'am. Thank you so much for having me here. And so please elaborate what exactly this organization is and what exactly organ donation is all about. Okay. So Organ India, actually organ is an acronym, so it stands for Organ Receiving and Giving Awareness Network, ORGAN. And it's an initiative of an NGO called the Parashar Foundation. The reason we started working on organ donation and transplant is because our chairperson, Mrs. Kirti Parashar, she herself needed a heart transplant in 2012, and she was told by the doctors that अब आपको heart transplant कराना है और कोई चारा नहीं है. They had tried everything, but they couldn't. She had a heart problem. She had restrictive cardiomyopathy. Okay. So they said that you need to have a transplant within the next 18 months. So her family and her daughter Anika Parashar, who is now the chairperson, they went everywhere, trying to find out कि heart transplant कैसे होता है, कहाँ होता है, उसकी पूरे process क्या है, and most importantly, where will you get the heart from, right? If you have to have a transplant, you have to have an organ donor from whom you get the heart. So they went searching everywhere. It was very difficult for them to get, one organization to give them all that information. So finally they figured out that they had to go to the south, to Chennai. That was the best place at the time to go and have a heart transplant. And so they went there, and eventually, thanks to the donor, a 51-year-old donor person who passed away, and his family agreed to donate his heart, she got her heart transplant. But in the meantime, we started Organ India as an initiative of the Parashar Foundation, so that we could educate people on what is organ donation, why it's good to be an organ donor, what are the benefits to society, from donating your organs, and also educate them about transplants, how they can, what is the process of getting a transplant. And so we started a helpline as well. Okay. So that was about 9.5 years ago. Okay. And slowly we've built up the organization, and now we do big campaigns on social media. We do it with corporates. We do a lot of training with the medical fraternity, because as far as organ donation and transplant is concerned, a lot of the medical fraternity also has yet to know more about organ donation and transplant, especially in the the smaller hospitals and the tier 2, tier 3 cities. So we do all of that, and we have helplines. We have people coming to us asking us कि we also need transplants. हमको transplant कराना है, कैसे करें, कहाँ जाएं, पूरा process क्या है, हमको please समझाइए, all of that. So we do a whole bunch of things. Okay. पहला क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूँगी कि किस किस तरीके के हम ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं. जैसे कि हम अभी तक ये सुनते आए रक्तदान, महादान, तो मैं कहूँगी ऑर्गन दान, अब तो अंगदान महादान है. अंगदान महादान. तो ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो हम जीते जी भी डोनेट कर सकते हैं, और ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो हम डेथ के बाद डोनेट कर सकते हैं? तो जीते, तो यू आर राइट, 2 टाइप के डोनेशन होते हैं. वन इज लिविंग डोनेशन, दैट मीन्स आप डोनेट कर रहे हो जब आप जिंदा हो. दूसरा टाइप का डोनेशन होता है मरने के बाद.
that is called deceased donation or known as cadaver donation. And उस वक्त पे आप सारे अपने organs donate कर सकते हो, लेकिन जीते जी आप सिर्फ living donation में आप सिर्फ एक अपनी kidney दे सकते हो क्योंकि आपके पास 2 kidneys हैं, या अपने liver, आपका जिगर जो है उसका एक हिस्सा दे सकते हो, because liver is the only organ that regenerates. So for example, if I have to donate my liver to a family member of mine, so they will put us both in the operation theatre and they will take a part of my liver, a big, about 65 to 70%, and they will transplant it into whoever I am donating to. और दोनों bodies में वो liver regenerate हो जाएगा. Okay. So that is why liver and kidney you can donate while you are alive. So that's called living donation. Now the law in India is that if you are a living donor, अगर आप किसी को देना चाहते हैं, वो आपका near relative होना चाहिए. That means somebody in the family. You cannot just go and give your organ to somebody else. If I need an organ, I can't just go and take it from whoever I want. It has to be a family member or a close relative. And there is a provision that even friends and distant relatives can donate, but for that पूरी एक process होता है, committee बैठती है decide करने के लिए कि actually ये आपकी friend है कि नहीं, तो वो सब देखने के लिए, तो nobody wants to have organ trading happening, nobody wants anything illegal going on. So that is when you're alive, जब आप जीते जी देंगे किसी को. लेकिन in the case of all the other organs like heart, lungs, intestine, you can't donate when you're alive, obviously. आपके पास एक ही heart होता है. So all that is after death. So after death, if somebody passes away, you have to die in a very specific way. You cannot donate your organs after a natural death. Okay. You have to be brain dead. So if you're brain dead, then you can donate your organs. So in that case, all the organs can be donated. That means heart, 2 lungs, 2 kidneys, liver, pancreas, and intestine. So that would be 8. What is brain dead? Yes, so that is बहुत सारे लोग जो हमारे साथ हम आते हैं, साइन अप करते हैं कि हमको अंगदान करना है, बहुत खुश होते हैं कि हम दुनिया के लिए कुछ कर रहे हैं, तो we have to explain to them that it's not necessary कि आपके जाने के बाद आपके organs donate होएं, क्योंकि you can only donate in the case of brain death. So what is brain death? Everybody says, oh, but what is brain death? And why can't I donate when I die a natural, like, if I have a heart attack or whatever. So brain death is because when you are brain dead, you are on a ventilator. And if you're on a ventilator, the ventilator is breathing for you, right? And it is keeping all your organs alive. Artificially alive, but they are still alive. So suppose किसी का accident हो गया, road accident, and उनको बहुत बुरी तरह सिर पे, दिमाग पे चोट पड़ी है, तो उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे, उनको वेंटिलेटर पे डालेंगे कि एटलीस्ट he or she should be breathing on their own while they figure out what to do. अब हो सकता है आप थोड़ी देर बाद आप ठीक हो जाओ और वेंटिलेटर से उतार दें और घर चले जाएं, बट क्योंकि दिमाग की इंजरी समटाइम्स बहुत गहरी होती हैं, उस वक्त जब आप वेंटिलेटर पे हो सकता है कि आपका पूरा जो ब्रेन है वो बिल्कुल it shuts down completely. You go, it's not coma. Coma is different. Coma means you can still come back one day. There's a possibility, right? Brain death is different. आपकी यहाँ पे brain stem होती है, तो वो बिल्कुल that completely dies. So there is no blood going to the brain. There is no oxygen going. You are completely dependent on the ventilator. You will never breathe on your own again. You will never regain consciousness. So that is brain death. And there are many tests, बहुत tests, 4-5-6 tests होते हैं hospitals में to determine that is this brain death or not. Because that will determine, right? You can't just look at an injury and say it's brain death. You have to do several tests. तो वो सारे टेस्ट करते हैं और उसके बाद ही ब्रेन डेथ डिक्लेयर करते हैं. अगर उस टेस्ट में निकल आया कि एक्टिविटी है ब्रेन में, तो then they are not brain dead. Then they stop the tests. So they do the brain death test. According to Indian law, you have to do it twice. So they do the tests, then after a gap of 6 hours, they have to repeat it. एंड ऐसा नहीं है कि एक ही डॉक्टर करता है वो टेस्ट, 4 अलग अलग डॉक्टर्स करते हैं उसी हॉस्पिटल के. उनमें से एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है हॉस्पिटल का और बाकी आइदर न्यूरोलॉजिस्ट और इंटेंसिविस्ट और द ट्रीटिंग फिजिशियन, whoever it is. So that is how brain death is determined.
it's laid down by the law what has to be done. It's very strictly monitored. Okay. And after the person is declared brain dead, then they approach the family. And the reason that after brain death you can donate is because you are on a ventilator and आपकी brain तो your brain is gone. And if your brain is gone, you're gone, right? अगर आपकी brain ही नहीं है तो आप you are not there. Yes. Because of the artificial life support, your organs are still functioning for some time. And that is when they can be donated. अब कोई accident हुआ और road पे ही उनकी death हो गई, then even the circulation to the organs will stop, right? And then the organs will not be of any use. They will all be dead as well. So that is why you have to be brain dead, you have to be in a hospital on a ventilator, and only then it's possible that if you are brain dead, then the organs can be donated. So the जितने लोग हैं जो brain death जिनकी death brain death से होती है वो बहुत कम है, right? Most people die of other, you know, either somebody has a heart attack or whatever, some disease or whatever. They're not necessarily brain dead. So that is the condition under which you can donate your organs. ओके तो इट मीन्स अगर जैसे किसी की रोड एक्सीडेंट पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई या घर पे डेथ हो गई किसी भी रीजन से, सो वो एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, चाहे उन्होंने रजिस्टर भी करा रखा हो, नथिंग कैन बी डन विद देम. ओके तो मैं सेकंड क्वेश्चन एक और चीज़ जानना चाहूँगी. साइंस ने बहुत तरक्की कर ली. अभी तक हमें पता था कि आइज डोनेट कर सकते हैं हम, लंग्स, किडनी, ये चीज़ें डोनेट कर सकते हैं, हार्ट डोनेट कर सकते हैं, बट रिसेंटली हमें पता चला है कि स्किन भी डोनेट होती है. करेक्ट. सो प्लीज इसके बारे में बताइए. सो अगर आपकी डेथ हॉस्पिटल के बाहर हो गई, विच इज़ नॉट अ ब्रेन डेथ बेसिकली, या हॉस्पिटल में ही हुई लेकिन ब्रेन डेथ नहीं है, आप अपने टिश्यूज डोनेट कर सकते हो. तो हम बात कर रहे थे वाइटल ऑर्गन्स की, राइट? हार्ट, किडनी, लिवर, ऑल ऑफ दैट. बट यू हैव टिश्यूज ऑल्सो इन योर बॉडी. तो आपकी जो आंखें हैं वो टिश्यूज हैं, राइट? स्किन इज अ टिश्यू, बोन्स, लिगामेंट्स, मसल्स, all of those, heart valves also you can donate that as well. आपकी जो valves है ना हार्ट की, अगर आपके हार्ट डोनेट नहीं हुआ, doesn't matter, you can donate the valves. और वो बच्चों में लगाई जाती हैं for people who are suffering from heart, babies who have suffering from heart problems. तो tissue donation can be done after any kind of a death. That doesn't matter. इसलिए जो आप नेत्रदान के बारे में बहुत एड्स होते हैं और आपको I'm sure मालूम भी होगा, तो वो आप घर से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं. आपको बस आई बैंक का फ़ोन मिलाना है. आप हमको भी फ़ोन कर सकते हैं. वी विल कोऑर्डिनेट एंड गेट इट डन. और आई बैंक आएगा आपके घर. वो आई थिंक 10-15 मिनट लगाएंगे और दोनों कॉर्निया सिर्फ ले जाते हैं, वो आँख नहीं निकालते. अब कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि वो हमारी आँख निकाल के ले जाएंगे, बट दैट्स नॉट राइट. दे ओनली टेक द कॉर्निया. जो कॉर्निया ना आपके काले काले उसके ऊपर पार्ट के ऊपर, बस वो ही निकाल के दोनों निकाल के 2 अलग अलग छोटे डब्बों में सोल्यूशन में डाल के ले जाते हैं और वो 2 अलग अलग लोगों को साइट देते हैं. Okay. So that's, it's quite amazing. So like you said, skin. So skin they don't take from your face. वो यहाँ से नहीं लेते, कहीं से visible होता है वहाँ से नहीं लेते, lower back से लेते हैं और back of the thigh से लेते हैं. और only the first layer of your skin. बस उनको वही चाहिए. और वो burn victims के लिए, acid attack victims के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनका सारा burn हो चुका होगा, जल चुका है, तो उनको grafting की ज़रूरत है. Okay. So this can also be done after death. This can yes, after death ही donate की जाती है. Yes, definitely. In fact, ये जो burn center होते हैं, जैसे बॉम्बे में नेशनल burn center है, वो तो गाड़ी भी भेज देते हैं घर पे. So the technicians come, they take about I think half an hour to 40 minutes, और वो skin निकाल के ले जाते हैं. और it's not that कोई mutilation होती है, ऐसा कुछ नहीं होता. And it's very useful. It's very very useful for burn. People who have burns. Okay, so third question में ये जानना चाहूँगी मैम, जैसे हमने ये भी देखा है कि जिन लोगों ने ऑर्गन डोनेट करा है या जो ऑर्गन रिसीवर है, उन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत नाम कमाया है. So can you tell some example to our viewers for like motivation? एक हमारे लिए काफी बड़ा motivation होगा कि हमें organ donate करने इसके बाद भी हम fit हैं और लेने के बाद भी हम fit हैं. तो ये बहुत it's a lot of myths, that after the organ transplant I have to sit at home, I have to be very careful, I can't do this, I can't do this, I can't do this.
There's no such thing. So in the world and even in India, we have what is called the Transplant Games. So World Transplant Games, it's a global platform. और हर 2 साल में somewhere around the world वहाँ पे एक गेम्स ग्लोबल लेवल पे गेम्स होते हैं, जैसे पैरालंपिक्स होता है, राइट? तो ये वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स होते हैं. इसका मतलब जिसको या तो ट्रांसप्लांट मिला है या फिर वो लिविंग डोनर है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और इन गेम्स में वो जो लेवल होता है बहुत हाई होता है. पीपल आर वेरी फिट. सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव नाउ बिकम द टीम मैनेजर्स फ्रॉम इंडिया फॉर द इंडियन टीम. एंड 2023 अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया में गेम्स हो रही हैं, वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स. तो हम पूरी टीम लेके जा रहे हैं वहाँ पे. तो हमने अभी रिसेंटली एक ट्रेनिंग कराई है मानव रचना यूनिवर्सिटी में फरीदाबाद में. वहाँ पे पूरा स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे बैडमिंटन और फुटबॉल प्लेयर्स की ट्रेनिंग हुई है. एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड मेट ऑलमोस्ट out of the 19 players came, I had only met one before. So even we met the other 18 for the first time, and we were surprised to see how fit they are. You know, they're really fit, and it just goes to show that you can do anything after you're after a transplant. It doesn't matter that you've been transplanted or anything. So they are very fit. They are all preparing to go to ऑस्ट्रेलिया टू रिप्रेजेंट इंडिया. और हम पिछली बार जब गए थे 2019 में, इट वाज इन इंग्लैंड, एंड वी वन टीम इंडिया वन 7 medals. So we won 4 gold medals and 2 silver medals. And in sports like badminton, squash, long jump, 100, I think there was a running gold as well, and golf. So these are all sports that everybody plays, and we were like right at the top. So we have a good team, and if you जैसे आप कहीं जाओगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये ट्रांसप्लांट पेशेंट है, राइट? बिकॉज लाइफ इज नॉर्मल. जब आप जो उनको ट्रांसप्लांट मिल जाता है, उनको दूसरी जिंदगी मिल जाती है. So they are, they're up and about, and they're working, they are doing all kinds of things just like any of us would be doing. So fourth question मैं ये जानना चाहूँगी, like is there any particular, being a nutritionist, I am really keen to know that क्या कोई ऐसा स्पेशल तरीके की डाइट कंसिडरेशन होती है कि हमें अगर हम अलाइव हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, लाइक मैं फ्यूचर में एक ऑर्गन अपने डोनेट करना चाहूँगी, तो क्या मेरे को अपने डाइट का ध्यान रखना चाहिए कि ओके मेरा जैसे लाइक आई हैव हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस, so am I capable of donating my liver? Yes. And I mean, what other dietary considerations I have to consider? For you mean if you want to think aage that I want to donate my organs after I'm gone? That's very noble of you. That's very nice. I think it depends from case to case. Some people who are heart recipients, like for example Mrs. Parashara, former chairperson, she would eat anything and go anywhere, and because she was so happy that for 3 years she could not have salt, and her diet was restricted. She couldn't walk up a flight of stairs without a big problem. So she used to eat whatever she wanted. But I think in the case of kidney recipients and liver, you probably have to be a little more careful about what you eat. You have to just follow your doctor's advice, and exercise, and just be very careful. And I think nutrition is one aspect to it, but you have to be mentally also very very positive. You have to keep your mental health very positive, and don't think about that, oh, what will happen if something else happens, what if my organ gets rejected or whatever. So I've seen that the transplant recipients who I come across, they have one thing in common, and that they are very positive in their outlook, and they just knew that they were going to be fine, and they are fine. So you have to take care of your nutritional health, of course, but you also have to take care of your mental health. Okay, and how can our society contribute for this donation? मतलब हमारी society कैसे help कर सकती है क्या? So see, everybody wants to contribute in some way or the other. We all think about it. Some people donate to charities. Some people, there's so many things everybody does. So they have to. What would we want people to do? We want people to know about organ donation. Go online.
find out about it. See some stories of how donations actually help so many thousands of people all the time, to get a second life. And we are not asking people to do anything in their lifetime. हम ये नहीं बोल रहे कि आप जीते जी कुछ ये करो वो करो, nothing. We just want you to know about organ donation. We want you to take a pledge that, maybe to get a donor card that, I pledge to be an organ donor, and we want them to discuss it with their families. Okay. Because you can save 8 people after you are gone. You can donate all your organs. You can help almost 30 people through tissue donation, various tissues that are donated. So you can do a lot of good, and all that is only going to be after you are gone. आपको जीते जी कुछ नहीं करना, आपको बस पता करना है क्या है ऑर्गन डोनेशन, अपने फैमिली से डिस्कस करना है, क्योंकि भारत में जो कानून है उसके मुताबिक आपका फैमिली, आपका परिवार ही डिसाइड करेगा कि आपकी डोनेशन होगी कि नहीं. इट इज़ नॉट माई डिसीजन, राइट? सो इफ आई एम ब्रेन डेड से in some hospital, they're not going to ask me, you want to be an organ donor? No, who are they going to ask? They're going to ask the next of kin, right? So if my family, of my next of kin don't know that this is what I want, then they'll be like, no, she never spoke about it, she didn't mention it, no, we don't want to do it. It's possible they say yes in any case, but it's much better if you, in your lifetime, you speak to them and you tell them that मुझे ये करना है, मेरे जाने के बाद आई डोनेशन तो करनी है, और अगर हो सके तो मेरे अंग दान भी करने हैं, मेरे अंगों को भी दान करना है. काफ़ी लोग तो बॉडी डोनेशन, फुल बॉडी डोनेशन कर देते हैं मेडिकल कॉलेजेस को. दे डोनेट their whole bodies for research purposes, for doctors to, yes. So you have to tell your family, because the law in India says the family will decide, the next of kin will decide. Okay. So that is the most important thing. I mean, you might feel very happy that, oh yes, I want to be an organ donor, ये वो. आप कार्ड भी बना के रख लोगे, आपके that card that you get is not a legal, it's not a legal document. It is just your intention to donate. Okay. Okay, तो आप हमारी वेबसाइट पे फॉर्म भरोगे, आपको हम नोटो इज द नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको उनका कार्ड मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के साथ. बट दैट डजंट मीन दैट इट्स लीगली अ कार्ड, राइट? तो लीगली इट इज़ द फैमिली हु विल डिसाइड. तो ये सारे पॉइंट्स सुन के मैम मेरे को लगता है कि लाइक आज की डेट में एवरीवन इज़ रिच. पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है. आप डोनेट करना चाहो तो डोनेट करने के लिए खाली वैसे नहीं है कि आपको पैसे ही डोनेट करने हैं. यू कैन डोनेट योर ऑर्गन्स. सो ये सारे पॉइंट्स सुन के मैम मेरे को लगता है कि एवरीवन इज रिच. मनी विल नॉट मेक यू रिच. पैसा आपको रिच नहीं बनाता. अगर मैं आज कुछ डोनेट करना चाह रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास पैसे होने चाहिए. आफ्टर माई लाइफ आई कैन डोनेट माई ऑर्गन. राइट. मन में श्रद्धा है डोनेट करने की. अच्छा, एक चीज़ और मैम, जैसे कई लोग रिलीजियस मिथ से काफ़ी डरते हैं कि कोई गुरु या कोई भी किसी को मना करता है कि रिलीजियसली आपको ये चीज़ अंग डोनेट नहीं करना चाहिए. जैसे आप आए हो 2 किडनी के साथ, 1 लिवर के साथ, वैसे ही आप जाओ, वैसे ही हम आपको भेजेंगे, आपको जाना चाहिए. तो मतलब क्या ये मिथ है और हम इसको कैसे बस्ट कर सकते हैं? Most people don't have that many religious hang-ups about donating. Mostly it's lack of awareness. उनको पता ही नहीं है कि organ donation क्या है, कैसे होगा. तो बेसिकली उस टाइप की ही उनके मन में है कि ये है क्या, कैसे होता है, ये किसी और को तो नहीं दे देंगे अंग, ये कहाँ जाएगा, हाउ डू आई नो कि इट्स गोइंग टू द राइट प्लेस, राइट? सो दोज आर द काइंड ऑफ मिथ्स दैट पीपल हैव. And if you talk about कि I should go as I've come, what about people who have organs removed because it's cancerous or something, right? वो भी तो होता है. तो फिर आप क्या आधे जाओगे? So I mean those kind of things, that is personal. It's from person to person. One can't say, but most religions are completely okay with organ donation. No religion says that you can't do it. Okay. Maybe they say that they don't say that you can do it, but they don't say you can't do it, So I don't see religion as a big problem. And if people have religious concerns, then it's their personal choice. One can't say anything, Okay, तो अगर जैसे मेरे माइंड में है, थॉट है किसी के भी माइंड में कि आई वांट टू डोनेट माय ऑर्गन, मेरे को मेरे ऑर्गन डोनेट करने हैं, तो क्या, बट एक
डर है, तो क्या हम आपके पास काउंसलिंग के लिए, जो भी चाहते हैं वो आपके पास हाँ काउंसलिंग बिल्कुल, के लिए डेफिनेटली आ सकते हैं? सकते हैं. वील मेक यू मीट पीपल हु हैव डन इट, कि उनसे पूछे कि क्यों किया उन्होंने. जैसे कि बहुत सारे फैमिलीज है जिनके बहुत यंग फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो गई है और इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है फैमिली में, लेकिन फिर भी उन्होंने उस वक्त अंगदान के लिए हाँ कर दिया. तो उनसे पूछिए कि आपने क्यों किया, आपने क्या सोच के किया. तो एक जेंटलमैन है मिस्टर जुनेजा, वो बोलते हैं कि हाँ, कि लोग बोलते हैं कि अंगों का दान नहीं करना चाहिए, फिर अगले, जैसे आपने बोला, अगली ज़िंदगी में वो नहीं, अंग नहीं होंगे, आँख नहीं होगी, जो भी है. तो वो बोल रहा है कि ठीक है, फिर दूसरी चीज़ों का दान क्यों करते हो, फिर धन का दान क्यों करते हो, फिर दूसरी ज़िंदगी में आपको वो भी नहीं मिलेगा. So I feel that these kind of things are not the real issue. The real issue usually is that they don't know much about organ donation. It's the first time they're hearing about it. They have not been told, पहले से that what is organ donation all about, and at that time it's very difficult to take a decision. Okay. So you can't fault the family also for not saying yes, because they don't know what it is. Now up in the last few years, there's a lot of talk around organ donation. People are getting to know more and more about it. So I feel there the level of mistrust and fear is going down, and more people are finding out about it. Okay. But there's lots of work to be done. Yeah, it's a long journey. Yeah, because in India there are almost up to 5 lakh people a year who are suffering from organ failure, and we have less than 1,000 organ donors every year. So most of those people don't get the transplant that they need. Okay, क्या ऐसा होता है मैम कि आप, अगर मेरे किसी फैमिली मेंबर ने कोई ऑर्गन डोनेट करा है, आइज डोनेट करी है, और जो रिसीवर है, तो क्या मेरे फैमिली मेंबर्स उनसे मिल सकते हैं? नो, दैट्स नॉट अलाउड. आपको बता देंगी कि इतने साल के लड़के को गया है या इतनी साल की लेडी को गया है, लेकिन आपको वो नहीं बताएंगे कि वो कौन है. बट आपको अपडेट मिल जाएगा कि वो ठीक है, बिल्कुल अच्छे कर रही हैं. तो लोगों को फिर खुशी होती है कि हाँ, इस अंगों से किसी 2-4 लोगों की या 8 लोगों की जानें बची हैं और वो सब ठीक है. लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं कि वो कौन है. और इसमें क्या कोई वेटिंग पीरियड भी होता है मैम, कि इफ समवन इज द रिसीवर तो उनको इतने टाइम तक वेट करना पड़ेगा? हाँ, बिकॉज अगर आपको सपोज डॉक्टर ने बोला कि फॉर एग्जांपल किडनी, कि अब आपकी किडनी नहीं काम कर रही, आपको ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा, देन व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको कोई हॉस्पिटल ढूंढना है जहाँ ट्रांसप्लांट्स होते हैं, वहाँ पे टीम को मिलना है, वो आपका पूरा वर्कअप करेंगे, और फिर अगर उनको लगे कि हाँ ये ट्रांसप्लांट केस है, तो वो वहाँ पे हर हॉस्पिटल के पास वेटिंग लिस्ट होती है. तो उस वेटिंग लिस्ट में उनका नाम जाएगा. वो वेटिंग लिस्ट जो स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है उससे कनेक्टेड है, तो आपका नाम वेटिंग लिस्ट पे है. तो जब ऑर्गन अवेलेबल होगा, जब किसी भी कहीं से डोनेशन होगी, फिर लिस्ट के मुताबिक आपको अंग मिलेगा. ये लिस्ट बहुत लंबी है, स्पेशली फॉर किडनी एंड लिवर, एंड बहुत सारे लोग दे आर डेस्परेट बट दे आर वेटिंग ऑन द लिस्ट. अच्छा, और जैसे आपने बताया मैम कि डोनेट वही कर सकते हैं या रिसीवर वही हो सकते हैं जो उनके फर्स्ट फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे अगर जिसने डोनेट करा वो वही रिसीव कर सकता है जो फर्स्ट फैमिली मेंबर्स है. लिविंग डोनेशन, राइट. सो से फॉर एग्जांपल अगर कोई बाहर से आया और या कोई थर्ड पर्सन है, तो मींस उनको अगर अर्जेंटली रिक्वायरमेंट पड़ी ऑर्गन की यहाँ पे, बाहर से आया मतलब कि देश के बाहर से आया, हाँ, तो क्या उनको उनकी हेल्प नहीं की जा सकती इस मामले में? तो अगर आप फॉरेनर हो तो आप वेटिंग लिस्ट पे अपना नाम डाल सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी इंडियंस को मिलेगी और उनका नाम सबसे एंड में होगा. ओके. तो मैं अगर लास्ट में एक सम अप करके एक सिंपल हम फ्लो में बात करें, से फॉर एग्जांपल आई हैव टू डोनेट माय ऑर्गन, तो हम एक किस प्रोसेस से जाते हैं, ये क्या एक पूरा स्टेप बाय स्टेप आप बताएंगे? सबसे पहले क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है, और तब आप एक ऑर्गन डोनर बन जाते हो? तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है. आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, इट्स www.organindia.org.
वहाँ पे साफ साफ सामने लिखा हुआ है अप्लाई फॉर योर डोनर कार्ड। टाइम हो तो प्लीज़ थोड़ा पढ़ लीजिए ऑर्गन डोनेशन के बारे में। It's better that you read everything before you actually pledge. Then you fill out the form and you submit it, and you get a mail telling you that अब हम आपको 3 या 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ऑनलाइन कार्ड भेज देंगे ईमेल पर along with the certificate, और वो कार्ड है वो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आएगा। और वो आप कार्ड या तो इलेक्ट्रॉनिकली रख सकते हो या फिर लोकल प्रिंटर में जाके आप प्रिंट कर सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डू यू रिमेंबर व्हाट आई सेड? What do you have to do after getting your card? Tell your family, yeah. So without telling your family, please don't get your card. If you're afraid to tell your family about this, then there's no point. उनको पता ही नहीं होगा तो आपके कार्ड का क्या मतलब है, right? तो you get your card and then you go and tell everybody that, you know, try and inspire your friends to show them your card that देखो मैंने ये इतनी अच्छी चीज़ की है। और आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक फॉर्म भरना है, आपको 2-3 मिनट लगेंगे और आप ऐसे 8 लोगों की जाने बचा सकते हो। सिर्फ 2 मिनट का काम, 2 मिनट का काम है, जान बचा सकते हैं किसी की, मतलब एक ऐसी चीज़ की कमी पूरी कर सकते हैं जो जितना भी आपके पास पैसा हो वो नहीं हो सकता। हाँ, सब एक ही जगह पे होते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। अगर आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट चाहिए, you are all the same. So that was lovely knowing all these things. Lastly, I can say कि हम अब अपने सारे viewers, irrespective आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो और आप किस प्रोफेशन में हो, हम सबसे एक अपील करना चाहेंगे, कम फॉरवर्ड और इस कॉज में हमारे साथ जुड़िए। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं एक अच्छे कॉज के लिए काम करती हूँ, आपको हेल्दी बनाना, आपको एक हेल्दी लाइफ देना। और आज मैं इस कॉज के साथ इसीलिए जुड़ी हूँ क्योंकि ये एक बहुत अच्छा मोटिव है। हम जिंदा रहते हुए भी किसी के काम आ सकते हैं, एंड दिस इज़ द ग्रेट पार्ट कि हम मरने के बाद भी किसी की एक ऐसी कमी पूरी कर सकते हैं जो कि जितना भी पैसा हो आपके पास, वो पैसा वो कमी पूरी नहीं कर सकता। मैम, हम किन किन लोगों को कह सकते हैं, कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल्स, हम सब किन को कह सकते हैं कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड contribute to this cause? So yes, corporates are very important in the whole scheme of things. They have a lot of CSR funds which they can give towards an NGO. They have big companies with lots and thousands of employees. उनके साथ हम awareness sessions कर सकते हैं, उनके साथ campaigns कर सकते हैं. So they can contribute in many ways. They can contribute by raising awareness amongst the employees. They can contribute by sponsoring one of the sports persons to go for the World Transplant Games. They can sponsor a campaign. They can do lots of things. Corporates that way are very essential to our work. Government is supportive. I think government involvement more in bigger awareness campaigns would be very much appreciated. And regular people, we would just ask you to please to go and pledge your organs, know more about organ donation, and most importantly talk to your family. And you can go to our website, you can apply for your donor card, and if you'd like to make a contribution, that would be very welcome. It will be great अगर हम अपने व्यूअर्स को वापस बता दें what is the name of the organization, और अगर आपको कांटेक्ट करना हो या ऑर्गेनाइजेशन में किसी को कांटेक्ट करना हो तो कैसे करें? You can reach us at www.organindia.org. There you can even apply for your donor card, or you can call us at 1-800-120-3648, or write to us at info@organindia.org. You can follow us at organ_India on Instagram and organ_India on Facebook, and we are also on LinkedIn if you'd like to connect with us. So friends, if you like this video, share this with your friends, spread awareness, share this with your relatives. आप खुद भी एक बार ज़रूर ये वेबसाइट विज़िट करिए और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं, हम भी इन तक डायरेक्ट पहुँचेंगे या हम भी आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।